Hello children, in today's class I will continue with some more principles of general organic chemistry. When you say you talk about acidity, basicity and nucleophilicity, once I know the three well, I will be able to do my reasoning questions better. If I don't, I am going to end up in trouble. Let's start one by one and build on them. Acidity first. An acid is one which is able to donate a proton. Let's take the example of acetic acid. Because its equilibrium shifts towards the right, giving some H ions in solution, we call it an acid. The equilibrium constant Ka is going to be the product of acetate ion into H ion divided by acetic acid. Higher the Ka value, more should be the H ion concentration. The stronger the acid, more the Ka. And if I talk about pKa, which is negative log of Ka, then I will say higher the Ka, the lower the pKa. तो जितना ज़्यादा अच्छा एसिड उतना उसका pKa कम. ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में क्वेश्चन करते वक्त हमेशा रहनी चाहिए. अब इसका ट्रेंड देखें. क्या फैक्टर्स हैं जिस पे एसिडिटी डिपेंड करती है एक मॉलिक्यूल में. फैक्टर नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जब पीरियोडिक टेबल में देखें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जैसे हम राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है. तो अगर मैं इनके कॉन्जुगेट्स लिखूं तो वो बनेंगे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस. और एसिड्स क्या हुए? CH4, NH3, H2O, HF. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, देखो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा. मुझे पता है HF एक अच्छा एसिड है और उससे कम डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ मुझे ऑलरेडी पता है. क्या ये कहना सही होगा फिर that electronegativity increases, acidic strength increases, but only when I am moving left to right in the periodic table. But what happens when I move down? Let's think again. But if I go down the group, let's study fluorine, chlorine, bromine, iodine. What happens to electronegativity? It goes on decreasing down the group. I find that if I talk about the acidic strength, HF, HCl, HBr and HI, down the group acidic strength increases. Now why would this be? This is not to do with electronegativity, it is a second factor, and that is bond dissociation energy. Because the bond dissociation energy goes on decreasing down the group, bond length बढ़ रहा है, HF, HCl, HBr, HI. बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड तोड़ना आसान हो रहा है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो रही है. सेकेंड फैक्टर जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करता है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो अब दूसरा फैक्टर ये हुआ कि डाउन द ग्रुप जब भी जाएं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा. इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा. अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेसिस लिखूं तो उनका स्ट्रेंथ अब क्या होगा? इफ आई वर टू राइट F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ रहा है. इसका मतलब क्या? अगर मैं इसमें बेसिक स्ट्रेंथ लिखती, कॉन्जुगेट बेसिक स्ट्रेंथ, तो वो कैसे बढ़ रही है? ऐसे बढ़ रही है. इज द मीनिंग ऑफ टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेफ्ट टू राइट, दैट इज अ फैक्टर टू कंसिडर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग. कॉन्जुगेट बेस स्ट्रेंथ क्या होगा? ऑब्वियसली इधर से इधर उल्टा हो जाएगा. तो सबसे अच्छा बेस अगर हम राइट टू लेफ्ट चलें तो वो कौन सा था? CH3 माइनस सबसे अच्छा बेस, NH2 माइनस उससे बेकार, OH माइनस और F माइनस. अब ये कौन सी स्ट्रेंथ है? बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कॉन्जुगेट्स ऐसे एसिडिक ज्यादा हुए थे. तो अब दो फैक्टर तो हमें समझ आ गए. तीसरा फैक्टर जो है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस इन सॉल्यूशन. तो लेट्स स्टडी दैट वन. व्हेन आई स्टार्ट विद फिनॉल, आई नो इट इज अ वीक एसिड, but what makes phenol acidic unlike an alcohol is the stability factor of the conjugate base. Let's write the resonating structures to understand this effect.
going from phenol to phenoxide ion, if this is more stable, by resonance, equilibrium will shift towards the right, more H plus will come in solution. Higher the H ion concentration, more will be the Ka and lower will be pKa. For phenol, the pKa value is approximately 10, which means that it is relatively a good acid. Let's compare it with an alcohol whose pKa value is only 16, which means that phenol is 10 to the power of 6 times a stronger acid than ethanol. Why would that be? Compare करते हैं resonance of phenol and phenoxide ion. तो phenol में, when I write the resonating structures, I find oxygen gets a plus charge by this shift. And so on. But when I write phenoxide ion, the first shift shows me that oxygen becomes neutral and carbon gets a negative charge. Now, out of the two resonating structures, I am talking of 1 and I am talking of 2. One is for phenol and the other is for phenoxide ion. When oxygen gets a plus charge, we studied about the condition of resonance. Electronegative element with a negative charge is more stabilized. So out of the two, there you never have a positive charge. तो कौन सा ज़्यादा stable हुआ? Phenoxide अगर ज़्यादा stable है, equilibrium right में shift करने के बाद H plus release होगा, तो ये हुआ हमारा factor. अगर conjugate base ज़्यादा stable है, तो बनना चाहता है substance जो होगा